Today we will start new exercise, which is the last exercise of this chapter and which is based on the identities. So this exercise is based on identities. So some of the identities already you have studied in your previous classes, in 8th class, right? 9th chapter was there, algebraic expression. उसमें पूरा जो आपका था, आई थिंक एक्सरसाइज 9.5, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज. एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? So in this chapter also, this exercise we are going to solve with the help of identities. So some old identities are there which already you have studied, and some new identities are also there. Okay, so now I am going to present my screen, then we will start the exercise. Okay, just give me few seconds so that I will start presenting my screen. And till then, children, you just keep your notebook and pen and book with you. Always whenever you are attending maths class, you must keep your notebook, pen and book with you. After completing this exercise, we will take some questions of RD also from this chapter only, or some other extra questions also I will provide it to you. Okay. Nilay, my screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes. So just wait, I am going to show you the exercise 2.5. We have to start. Long division and all, everything we have discussed. Parallelly, you should solve the questions at home also. Then only you will get. Otherwise, every day you are learning the new things. If you are not repeating the same, if you are not doing practice with some more questions, so it will be difficult to you. है ना? अचानक से नहीं आएगा फिर. Okay. So here it must be clear to you now. Is it visible clearly, Nilay? Yes, ma'am. Okay. Yes. So read the question, Nilay. This is the first question of exercise 2.5. 5. Yes. Okay, ma'am. Use suitable identities to find the following products. First, x plus Yes. 4 bracket x plus 10. Yes. This is the question which we have to solve with the help of identities. Okay, we need to find the products. As how we can say products, you can see as these two algebraic expressions are there in the brackets and no sign is there in between. So you can see here we have to do the multiplication and we need to find the product. तो एक तरीका तो यह है कि डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई, टेक फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई इट विद द अदर, है ना? और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना. ओके, सो लेट्स सी. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, x plus 4 x plus 10. तो ये वाली आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है. x plus 4, here the first is variable, second is numerical value. तो फर्स्ट जो वेरिएबल है दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो वी कैन कंपेयर इट विद द आइडेंटिटी x plus a. You can see the identity here. X plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x
plus AB. So this is the identity. You should write it. It is highlighted also. So write this identity in your notebook, and all these identities are given in your NCERT book from page number 44 to 48. 44 से 48 के बीच में ये सारी आइडेंटिटीज आपको गिवन है आपकी बुक में ही. सो आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड राइट ऑल द आइडेंटिटीज एट वन प्लेस so that it will be easier for you to study whenever you are studying it after our presentation or after our class. Even at the time of examination you will get all the identities together, so it will be beneficial for you. So I suggest you should write all the identities together, even though at once at least you have to write each and every identity in your notebook. Okay, so there are total 8 identities which are given in your book, and on those identities, on the basis of that we will solve the question. So as we have compared it with the identity x plus a, x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab. तो compare it, तो x की जगह पर ही है x plus a. So what is a here? This 4 is a. You can see here a is equals to 4, and what is b? B is equals to 10. So put the value in the identity. In this way you will write the solution. See, first you will write using the identity, and whenever you are solving children the question with the help of any identity, you must mention that identity. Okay, that identity must be written. आपको वो आइडेंटिटी लिखना है, और लिखने के बाद में फिर उस आइडेंटिटी के साथ गिवन क्वेश्चन को कंपेयर भी करना है. इज दैट क्लियर? Nilay, am I audible properly, beta? Yes, ma'am. Okay. Now see, when we have compared it, so x plus 4 into x plus 10, so x plus a into x plus b is equals to x square. So first term will be x square, then plus a plus b. What is a and b here? 4 and 10. So 4 plus 10 into x plus AB. AB means A into B. So A into B is 4 into 10. After solving this, what will we get, children? X square plus 14x plus 40. So this is the answer. In this way, we have solved this question with the help of this identity. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear to everyone? If anyone is having any problem, any doubt, then okay, then you can write it in chat box. अगर कोई doubt है तो आप chat box में लिख सकते हो. Nilay will convey the message. Okay, ठीक है. So I think now this identity must be clear to you. So some questions which are based on this particular identity, that you should write it. अब बाद में आप अपने आप से solve करिएगा. Let's see here second part of this question. अब इसमें क्या है? It was directly in the form of x plus a, x plus b, first part. Now so you can see the second part. In second part, it is in the form of x plus a into x minus b, right? अब इस केस में भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, कई बुक्स में अलग अलग आइडेंटिटीज भी लिखी होगी, बट यू शुड गो थ्रू विद दिस आइडेंटिटी ओनली, प्लस वाली. तो जब कंपेयर करोगे तो x की जगह तो x ही है, a तो यहाँ पर भी प्लस 8 है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या होगी? ये देखो b यहाँ पे तुम लोगे -10. माय कर्सर इज विजिबल बेटा? Yes, ma'am. यहाँ दिख रहा है, ये रेड डॉट आई हैव पुट हियर. So what is b? b is -10. Okay, now compare it and put the value. Identity लिखोगे, identity लिखने के बाद में sorry, in the form of the question you will write it. So x plus a into x plus b is equals to x square plus, what do we get? a plus b. तो a plus b क्या हो जाएगा यहाँ बेटा? 8 plus b की वैल्यू क्या है? -10. तो 8 plus -10 ब्रैकेट क्लोज into x plus ab. ab यानी a into b, तो 8 into -10. So here what will you get? X square plus 8 plus minus ही हो जाएगा minus 8 minus 10 into x, और 8 into -10 क्या हो जाएगा? -80.
Now after solving it, what will you get? X square minus 2x minus 80. Is it clear? Yes, ma'am. Nilay, is it clear? Yes, ma'am. Is it Yes, clear ma'am. to everyone also? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लिखी है? किसी को Yes, कुछ ma'am. प्रॉब्लम? Okay. So these were the questions which are based on this identity x plus a, x plus b. Now I hope you all have got it. Now we will take some other identity. Okay. Should we move ahead? Yes, ma'am. Okay. See, now the fourth part of this question. Parallelly, are you writing it or not in your copy? In your notebook, are you writing it? Yes. Yes, ma'am. All of you must write it. ma'am. After coming back to the meeting, Yes, ma'am. I will ask to anyone to show his or her copy. ठीक है, नोटबुक आपसे मैं वैसे ही बताने के लिए बोल सकती हूँ. So be prepared for that. Now see here, fourth part of this question, it is not like x plus a, x plus b, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये है y स्क्वायर. अगर x स्क्वायर भी होता तो स्क्वायर के टर्म में है, so we cannot use here x plus a, x plus b. ठीक है, तो here it is in the form, अगर इस तरह से लें a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, और अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में आइडेंटिटी लेते हैं तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दैट वे इट इज गिवन. तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आइडेंटिटीज पहले याद करोगे, तभी क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी. ओके बेटा, सो ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न द आइडेंटिटीज. And all these are the identities already which you have studied in class 8. तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. So using the identity x plus y, x minus y. So what is the value of this? X square minus y square. Now compare the given question with this identity. What do we get? We get, see, x is equals to y square. Okay, x is equals to y square. And y is equals to 3 by 2. Now when we compare it, तो x square minus y square तो क्या आ जाएगा? Square of y square minus square of 3 by 2. So what will you get? Y to the power 4, है ना? Square of y square क्या हो जाएगा? Y to the power 4 minus square of 3 by 2, तो square of 3 9, square of 2 4, so we will get 9 upon 4. So here it is the solution for this question by using this identity. Okay, so this is the second identity which we have used. X plus y, x minus y is equals to x square minus y square. Up to this, do you have any problem? No, ma'am. Okay, screen is also clear. No, ma'am. Yes, ma'am. Have you written in the notebook? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. All of you should convey your message to Nilay by typing your message in chat box. You need not unmute your mic. Only Nilay can unmute because he is the monitor of today. Yes. Now we are starting the next question. Evaluate the following products without multiplying directly. Yes, children. Now pay attention. Here the question is 103 into 107. अब ये हमने सिंपल अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता तो ये तो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लिया था कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, राइट? वी नीड नॉट फाइंड द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट. अब बिकॉज वी आर स्टडिंग व्हाट आइडेंटिटीज, राइट? तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. तो अब इसमें आइडेंटिटी डायरेक्टली कैसे, तो x इंटू वाई के फॉर्म में तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अरेंज दिस क्वेश्चन. तो ये जो भी 100 या 1000 के अप्रोक्सीमेशन में होंगे तो इन दैट वे वी विल राइट आइदर 100 प्लस और 100 माइनस या 1000 प्लस 1000 माइनस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, है ना? तो 103 को क्या लिखेंगे हम? 100 प्लस 3. वैसे 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7.
Now you can compare it with the identity x plus a into x plus b. तो x क्या हो गया यहाँ पर 100, a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 7. Okay, is it clear? Now we are using this identity x plus a into x plus b, so we will get x square. This is a square, okay? X square plus a plus b into x plus ab. So on comparing it, we have got x is equals to 100, a is equals to 3, b is equals to 7. Now put the identity. This is the given question. We have broken up in this way, and now we are comparing it with the identity. So x square means square of 100 plus a plus b. It means 3 plus 7 into 100, right? And into 3 into 7. Okay, children. So after solving it, you will get square of 100, that is 10,000, plus 3 into 7, 3 plus 7, that is 10, into 100, 1,000, and 3 into 7 is 21. So after adding it, we will get 11,021. Okay. So write this and solve 95 into 96. Till then I will just plug it on. इसकी बैटरी जा रही है. Just 1 minute. You just solve this question. I am putting it on charging. मुझे टाइम देखना है कितने बजे अम्मा 2:28 कितने बजे अम्मा टाइम नहीं बजे नहीं. मुझे अकेले डर लग रहा है Yes, children. Have you solved it 95 into 96? Nilay? Yes, ma'am. Have you solved 95 into 96? All of Yes, you? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here it is 95 into 96, means you should write it 100 minus 5, 100 minus 4. Now when you will compare, here the identity it can be in this form, है ना? After solving it, you will write the answer. यहाँ पे क्या किया हुआ है बेटा, इसको इसी फॉर्म में लेके a और b के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है. तो ये तो सेम क्वेश्चन एज आई रिमेम्बर इट वाज देयर इन योर क्लास 8 आल्सो. एम आई राइट? Nilay? Am I audible, Nilay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this type of questions were there na in your 8th class also? Yes, ma'am. Okay. Now, can we start question number 3? Factorize the following using appropriate identities up to question number 2. Does anyone have any problem? If they have any problem, they should write it in chat box. Then you should convey the message. Do they have any problem? No, ma'am. Okay. Now see. This is the third question. Nilay, read the question, beta. 9x square plus 6xy plus y square. Yes. Now in this this question, beta, we have 3 terms, right? अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये उनमें से किसी भी टाइप का नहीं है. So now what do? We have studied some more identities like x plus y whole square, है ना? पढ़ा था ना ये आइडेंटिटीज भी. तो this question can be arranged in that way. उस फॉर्म में हम अरेंज करके देखते हैं. इसके लिए अगर आपको स्क्वायर्स वगैरह भी याद होंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन समझ में आएंगे. So you can see here 9x square. So 9x square can be written as 3x whole square, है ना? Square of 3x लिख सकते हैं 9x square को. Yes, ma'am.
अभी बीच के टर्म को हम बाद में अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2xy. अभी लास्ट टर्म देखो y square, as no numerical value is here, so we can consider that 1 is here, right? तो अभी क्या हो गया है, इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख लिया. तो 9x square can be written as square of 3x plus now this 6xy, it is in the form of 2xy, तो 2 into x यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, है ना, x is 3x and then what is y, y तो y ही है. तो बेटा जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो आई विल सजेस्ट यू शुड नॉट यूज द सेम वेरिएबल इन द आइडेंटिटी, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ x and y, and if you are writing like this however it is written here, so you may get confused. Can we write x equals to 3x? No, not at all. तो आइडेंटिटी आप किस फॉर्म में लिखना, फिर a और b के फॉर्म में. तो व्हाट यू शुड राइट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. देन ऑन कंपेयरिंग इट you will get a is equals to 3x and b is equals to y. Is it clear? Yes, ma'am. देखो अब यही बात होती है जो मैंने आपसे Yes. स्टार्टिंग में कहा था, सॉल्यूशन तो अवेलेबल है बट सॉल्यूशन की बारीकियां आप लोगों को पता नहीं होती है. ये जैसे इसमें से देख के सॉल्यूशन तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन आपको ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये सिर्फ हम लोग ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं, right? So what you should write, I will suggest when you are writing in your notebook, you should not write it in the form of this identity. जहाँ लिखोगे तो you should write the identity a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. साथ साथ लिखते जाओ. Write it, a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. Now on comparing, a is equals to 3x and b is equals to y. ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ a कौन है 3x, तो 3x प्लस y होल स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर. यू कैन सी, ठीक है, ये 3x प्लस y होल स्क्वायर इज द आंसर. और इसको क्योंकि हमसे प्रोडक्ट पूछा है तो वी विल राइट इट 2 टाइम्स. स्क्वायर मीन्स द सेम थिंग इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, है ना. तो 3x प्लस y होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y. आई होप यू ऑल हैव डन इट. Yes, ma'am. ओके, Yes, up to this do you have any problem? No, ma'am. So now I am giving you the second part. You just solve it by your own, then you can check it from the screen. It is already there in the on the screen, but I will suggest screen से देख के नहीं छापना है, आप अपने मन से करिए and then you can check it from the screen. Right now solve the second part. Do it fast. So you can check yourself also whether you are getting it in proper way or not. So here is the identity which is applicable is a minus b whole square, because in between अगर minus का sign आ जाए तो we should try to get it in the form of a minus b whole square. After solving it, after getting your correct answer, you should type y in chat box so that Nilay can convey the message. One more minute I will give you to solve. Not more than that is required. And most of them have solved the question. Okay, very good. Well done, children. Now see the third and the last part of this question.
x square minus y square upon 100. So now here only two terms we are having. तो अब इसको हम a square minus b square के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. तो x square is as it is, y square upon 100 can be written y upon 10 square. लिख सकते हैं इसको. Yes, ma'am. हाँ. So just we have arranged it in the form of this x square minus square of y upon 10. Now we will apply the identity a square again because the question is in the form of x and y. So we will take identity in the terms of a and b. So you will write using identity a square minus b square is equals to a minus b, a plus b, or a plus b, a minus b. In that way you can write it. Now you can see by comparing what will we get. A is equals to x and b is equals to y upon 10. Pay proper attention. A is equals to x and b is equals to y upon 10. Now apply the identity. So what is the identity? A plus b, a minus b. So you will write x plus y by 10 into x minus y by 10. So this is the solution for this question. So up to this it is okay. Up to question number 3 we have solved it today, and all these 3 questions were based on the identities which already you have discussed in your previous classes. Okay beta. Now I am coming back. 4th question we will take it in our next class because already the time is also about to get over, है ना. तो आगे का आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ के रखना. Okay, ma'am. Yes. So I hope you all have must understood it. ये आज जो भी पढ़ा आज अच्छे से समझ में आया. आज स्क्रीन भी प्रॉपर्ली विजिबल थी और वॉइस वाज आल्सो प्रॉपर्ली ऑडिबल. Yes, ma'am. So how was your experience, today's experience? Type in chat box. आज का एक्सपीरियंस कैसा था? चैट बॉक्स में बताओ. गुड और वंडरफुल और कुछ अच्छा अदर देन गुड, सम अदर वर्ड. ओके, नाइस, वंडरफुल. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो डिड यू एंजॉय इट? Yes, ma'am. Okay children, so be at home. Amazing, well done, very good, amazing. चलो, हाँ, this is more important children के parallelly you should enjoy also the class. Till you don't enjoy, you cannot learn it in proper way, है ना. अगर हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे. वेरी गुड प्रणव also have downloaded that note and he was clapping through it. Very good. So side by side you people are also getting टेक्नो सेवी और एक्सपर्ट हो रहे हो. ऑलरेडी तुम लोग हो, नो डाउट, लेकिन और अच्छी अच्छी चीजें अभी सीख रहे हो. तो वेल डन, कीप इट अप एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, है ना. उस पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं या अदर रेफरेंस बुक्स में भी इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ऑल यू शुड सॉल्व. दैट इज फॉर योर होमवर्क. नीला, यू मेड वेरी वेल पीपीटी. तुमने प्रेजेंट की थी पीपीटी दैट आई हैव सीन, है ना. अच्छी थी तुम्हारी पीपीटी, आई हैव सीन. और कई बच्चों ने भी भेजी है, उनकी भी बहुत अच्छी थी पीपीटी. वेरी गुड. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. So take care of yourself. Sai Ram. Stay at home. Be happy and healthy. Okay. All the best. Sai Ram, ma'am. You can leave the meeting. Yes. Sai Ram. Sai Ram, ma'am. Sai Ram. Sai Ram, ma'am. Sai Ram.